welcome guys to the third episode of our podcast 90 plus 3. How are you guys feeling today? Not that good because United lost, but yeah, I'm happy that Chelsea lost as well. So yeah. Okay. Ayush, you can show your face. It's okay. We have started the video. It's okay. United, एक दो दिन हो गया हार के. No problem. It was a depressing week, and it is depressing. Why? Because just at the start of the match week, United's match, and we lost. Yeah. But on the flip side, as Suyash mentioned, I think every huge team, every big team dropped points. So I'm okay, manageable. I think. It's positive let's that people are start. dropping points. Yeah. Let's start with the big games because there were few, like there were plenty, and there were some few games which turned out to be big. So let's start with the first big game, which was Chelsea versus Manchester City. So Tuchel's boys, they were flying. They were like till now they were like playing so well and everything. And apparently, Pep's City were missing a spark. So let's try to decipher what happened, boys. Anyone, Aayush, Suyash, which order you want to go to? Let's start. Actually, I think if you've seen the match, there were no major chances, I must say, because Chelsea was just, I think they parked the bus, and probably City was doing what they do best: pass it around, move the ball, and they got a lucky goal deflection wise, which was, I think it was deserving. City should have won the match because Chelsea didn't do anything. And the main point which I have been mentioning, I don't think I mentioned on this podcast, but the other friends, Lukaku is always missing against big teams. If you have realized, I know you were saying that before the season also. That, yes, yeah, you will not perform against. Even if but even the if first game United, at Chelsea as a whole, they were not good. So it also depends on but how the team plays because Lukaku, I will not say he needs service, but he is kind of a striker that you have to play good attacking football so that Lukaku can get. I mean, you have to get in good positions attackingly, and that's when Lukaku shines. If Chelsea is not playing attacking football themselves, then Lukaku cannot do much. I mean, इतना individual brilliance पे rely नहीं कर सकते. Tuchel का तो system वाला play है. The players already know where they want to be. But even but then, वही है ना, दो system वाले play very similar system भिड़ गए तो either one of them had to back out, and I didn't think it was Tuchel because considering the form they were in and how flying they were in the past games. Yeah, and City had a boost as well because De Bruyne, Foden came back. So Torres nahi khela. They had a boost with good players coming back as well. And Tuchel ka it makes sense even though they are not attacking. It makes sense because वो लोग इस point पे league में they do not need to go for a win necessarily. They can go with a mentality to avoid a draw. I don't say कि I'm not implying कि वो लोग ने किया होगा ऐसा. But a draw would have been a good result. So maybe Tuchel ने ये सोचा होगा. I don't know. But हाँ. So City का boost भी था. But now it's a good thing because Chelsea, they had a lead and everything. Now even City is going head to head, and there are more things coming up. We'll get to another team which was on top and lost points, so that will be for another section. So let's move on to the second week, which we can say the big match, which in this week we didn't expect to happen: Brentford versus Liverpool. So what a game, bro. What a game. I'm honestly, as Aayush said, the week started with United losing their match. We will talk about it in a separate section. But even I was sad, even I was depressed. I did not feel like watching a lot of matches. But then Liverpool happened. Brentford and Liverpool, it was just like a match going on in the background. I was like on my phone and I'm seeing the goals are going on. And then I started paying attention. And then क्या match था यार, और Brentford क्या team है bro. It's like वो first season होता है ना, कोई newly promoted team have those seasons like Leeds को हुआ था last year. Brentford क्या fight है bro, manager भी बहुत सही है, passionate है. So I just wanted to point out Ayush Tony क्या खेलता है, all round brilliant, proper target man. He plays like Kane from last year. The Kane which turned up for Spurs last year, being number 10, number 9 everywhere. So Tony is exactly like that player. I think अभी Brentford, I think तूने ही शायद पॉइंट आउट किया था लास्ट पॉडकास्ट में कि अगर ब्रेंटफोर्ड स्टे करेगी तो टोनी किसी और बड़े क्लब में चले जाएगा. मतलब no disrespect to Brentford, but वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का है. We have to admit it. है तो है. But depends. Brentford यार वो दिखा रहे हैं वो लोग कि खेलना चाहते हैं हम. Also Brentford at home is a tough fixture now. And they have been performing good at their home. पहले में आर्सेनल को फर्स्ट डे में ही हरा दिया. लिवरपूल से ड्रॉ इज अ बिग थिंग. And stadium बहुत buzzing है bro. लोग मतलब they don't give up.
टीम भी गिव अप नहीं करता और स्टेडियम भी भाई फैंस भी पूरे टाइम रोर कर रहे थे पूरे टाइम व्हाट एटमॉस्फेयर मतलब क्रेजी था एंड And I लिवरपूल think भी it's आई मीन exactly जोटा का गोल how हेडर था Suyash pointed out. हम्म Brentford is playing like Leeds from last year. If you hit, Yeah. we hit them back. yeah मतलब not like Leeds Absolutely. but they have that Leeds was a newly promoted side right They have and that mentality. they had that mentality Mentality. लीड्स का प्ले डिफरेंट है ब्रेंटफोर्ड का डिफरेंट है बट ब्रेंटफोर्ड नेवर गिव अप टू बी ऑनेस्ट और क्योंकि स्टेडियम में तो लाइक उनका वाइब उनको going in their stadium and getting a point out of Brentford or getting 2-3 points out of Brentford is very difficult for me. Yeah. Any team will struggle. So it's not Liverpool. Props to Brentford. बहुत बढ़िया खेले and Liverpool से draw किया. That's a very good. We'll come to the other big matches, but the North London derby was a surprise. Arsenal. Let's say even as an Arsenal fan, I wouldn't be optimistic about them winning in the way they won. Yeah. So thoughts about that? Honestly, I was optimistic about Arsenal winning, and because it was a fixture on Sunday, I was not in the mood with United के बाद ऐसा नहीं कि मतलब depressing mood ही चल रहा है. Sunday था new day, I was happy. और Arsenal का bro, I had the defender Ben White FPL में, and I thought that they'll keep a clean sheet. Honestly, मैं इतना optimistic था Arsenal के बारे में, because those 1-0 wins का matter bro. 1-0 लेके थोड़ा momentum आ गया, and Spurs का थोड़ा सा down time चल रहा है क्योंकि अभी Nuno पे बहुत pressure भी आ रहा है, and Nuno हार के भी आ रहा है. So Aayush, so he will pick on Nuno now. कि I was right. He's असली Mourinho. मतलब Aayush proper social media का एकदम शहंशाह है एकदम. I will not pick on करेगा Nuno. Nuno के नाम पे. I will not pick on Nuno. Why? Because he's trying something different which he is not used to. He's trying to be attacking, and he is not being attacking. I think which will take time. Yeah. Which will take time. So इसलिए starting के 3-4 matches 3-0 जा रहे हैं because he's trying something else which he's not used to. Hence, I will stay on the point that he's सस्ता Mourinho, but he's what he's better at is adapting and trying a new style at a new club rather than sticking to one mentality. Sorry, Ayush, ये करने के लिए interrupt. But yes, अगर तू नहीं बोलता ना कि it will take time, तो आयुष मानता भी नहीं it will take time. नहीं मानता. मैंने पहले इससे बीच में डाल दिया. Nuno के अगेंस्ट चालू हो जाता हूँ. लेकिन bro, I agree. मैं रेडी था. Fans like आयुष ना जो मतलब थोड़े reactionary होते हैं वो required होते हैं यार bro, क्योंकि वो लोग भी ना थोड़ा क्लब को ना स्टैंडर्ड्स को हमेशा सेट रखते हैं. थोड़े रिक्वायर्ड होते हैं. प्रेशर बना होना चाहिए. और अगर हम लोग कंप्लेसेंट हो जा रहे हैं ना कि बिलीव तो ऐसे फैंस बोलते हैं कि भाई रियल इश्यूज क्या है, रियलिस्टिकली मैं नहीं करूंगा बिलीव. मैं क्यों करूं बिलीव? मतलब मैं क्यों करूं एग्जैक्टली. तो आई रियली लाइक आयुष बिलीव से यूनाइटेड में करते हैं, बाकी कहीं नहीं. what I like about him is he's constant with his views. It doesn't change. तो लग रहा है वो चूतिया है मतलब अरे है मैं प्रूफ. No, let's not talk about Ayush too much. बेचारा स्पॉट पे आ गया. लेकिन हाँ, आर्सेनल टॉटनहम का ब्रो, आर्सेनल वाज प्लेइंग ब्यूटीफुल फर्स्ट हाफ में ब्रो. इतने ऑनेस्टली नथिंग चेंज्ड यस. वो लोग वो पैटर्न्स ऑफ प्ले करते थे बट दे वर जस्ट अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट. ऑबामेयांग नॉट किकिंग. इट वाज हाँ पहले इट वाज नॉट किकिंग. ऑबामेयांग एकदम शार्प था. साका वाज एकदम शार्प. एवरी प्लेयर ऑन ब्रो. कौन था वो नया साइनिंग? टोमियासु भी नहीं, और एक और अरे एकदम फेमस साइनिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा. ओडेगार्ड ब्रो क्या खेल रहा है. आर्सेनल का बाप ओडेगार्ड बाप खेल रहा था. पूरी टीम अरे ओडेगार्ड because he got the time to adapt. He got the time to adapt. एक पूरा सीजन खेल लिया. Now he can do stuff. Yeah, Ayush, you were saying something. मैं ये कह रहा था कि पैटर्न्स ऑफ प्ले सुयश मेंशन, आई थिंक आर्सेनल वो वही कर रही थी. बट like last time if you remember, you guys told me that Nuno's team Spurs turned out very good in the first half, high intensity and all these things. आज एकदम opposite था. So they didn't turn out actually, which pressure which I was expecting कि since they are playing North London derby and they are playing away at Arsenal, they should turn out with a high intensity in the first half at least. But वो आया ही नहीं first half में. And I think Suyash mentioned कि वो कुछ ऐसा different नहीं किया Arsenal ने. So थोड़ा intensity बढ़ा के सिर्फ pattern of play वही किया और वो घुस गया कितने में. Suyash, precisely what we were talking last week. This is what confidence does to a team. Exactly, bro. That's to a team. That's to पहले भी यही खेल रहे थे. But now just they have the confidence. उनका click हो रहा है. तो अब तो भाई North London derby में on paper a better team को फाड़ा. On paper I'm saying on paper on a better team मतलब player to player Spurs have a better team on paper to put than Arsenal. You can argue, it's a debatable thing, but you take Spurs players. I'm saying, I'm not saying they're the better team and they would always win, but but it's a good thing to do, and which Arsenal का थोड़ा अच्छा हो रहा है, and we wanted that. Yeah, bro. Yeah, confidence. And Smith Rowe and Saka. Bro, वो youngster. I had him in my FPL team. Yeah, he had Saka. Yash is doing really well, honestly, in our
I'm saying honestly too much, but वो अपने FPL मिनी लीग में बहुत अच्छा कर रहा है यश. Kudos सब to you. pivot हो जाएंगे. सुयश के honestly. Plus एक बॉल बोलूंगा -4 मत लेने लग तू, because तू -4 लेने लग जाता है ना कभी-कभी थोड़ा रिस्की हो जाता है. And Arsenal bro. And on the flip side, Kane is not turning up yet. You can definitely see a motivation issue or mind issue in his brain, I think. थोड़ा टाइम लगेगा. He will need something to turn it around. कोई बड़े मैच में मारेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वैसा कुछ लगेगा उसको. And Ayush because of मन नहीं लग रहा उसका उधर. Ayush has got it exactly right. Mentally, a psychological थोड़ा issue है bro, because he did not want to stay. He had to stay. Give him like 8 or 10 games का period, and like Yash says, कोई बड़े मैच में मारते उसके बाद he'll just उसका माइंडसेट फिर वहीं पे हो जाएगा. ओके, अब मैं स्पोर्ट्स पे हूँ तो let's just focus on it. I can't change the past psychologically, but I think वो थोड़ा जीत सकता था. दिसंबर जैन तक आ जाएगा थोड़ा. हाँ, तब तक सिटी का हैंगओवर निकल जाएगा. And Nuno भी प्रीमियर जीत सकता था, बट अभी भी ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा, ऐसा है. वो तो अभी मतलब वो हमेशा एक मिस्ट्री और एक क्वेश्चन रहेगा ही. One question, yes, are you that okay? Yeah. No, I was just asking. No, it's okay. You can finish it up. Then we'll wrap up this section. No, but what do you think Nuno what do you think Nuno has to change, or does he have to just keep on what he's doing and just wait for his time to come a little, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे. I think the latter. I think he keep on doing what he's doing. He needs to have his set of players. He needs to have कि यही मेरे first 11 है, and these are the few tweaks which I will be doing, because now he's at like a month and he's done experimenting. He knows who can do what, and now he should like finalize and fixate upon a 11 which we can count on. And obviously they're trying कि हमें ऐसा खेलना है, but वही है, वो implementation सालों लग जाते हैं. कोई टीम को कोई टीम आधा मैनेजर आधा सीजन में चैंपियंस लीग जिता देता है. Actually, it will depend on the players and how they are able to adapt to tactics also. If you see, I think Dele Alli वापस उसमें चला गया है. उसका मन नहीं करता खेलने का, मेरे को लगता है. वो मोरिनियो उसको सही पिक करता था कभी-कभी. Bro, मैं क्या बोलूँगा ना, आयुष देख, अभी because Spurs are on a loan ना, उनके players को भी तो individual pick out करेगा ना, they will feel low on confidence. I noticed that with Arteta too. Aubameyang, Saka, Emil Smith Rowe, सब लोग अच्छा कर रहे थे, they were doing good things, but थोड़ा सा उनका ना, they are not sharp enough. वो ना शूट मारने के लिए 2 बार सोचेंगे, वो इंस्टिंक्ट पे नहीं जाएंगे. But if the team feels confident, थोड़ा बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ना, I think Nuno will do good. Maybe time लगेगा, because adapt करना है सबको, पूरे क्लब को adapt करना है इनफैक्ट उसमें. तो maybe time लगेगा. I think Spurs को ये सीजन ज्यादा जज वैसे भी हम करने नहीं वाले थे, but I think a success for him would be a Europa League place if I'm optimistic. I don't know. मैं 4th 5th तक का, मैं 4th का बोल रहा था फर्स्ट पॉडकास्ट में. But let's see, maybe time ही है. Spurs को एक ही चीज की जरूरत है, time. So I was going to come to the chakma of the week, the game which we didn't expect would pan out the way it did. So क्या हो गया? Like I want to see. I saw very little of it because I was traveling. So I saw bits and pieces on the phone, how much ever I could. Yeah. So the few points which I saw and which I can ask you guys, which I can put you to, you can clear it, and you guys would be the better person to answer. So one or two few things was the intensity. I think United were not so we always not always complain, but we talk about teams sitting back and letting United break them down, and you face a difficulty in doing that. But now in this game, I think it was the like exact opposite of that. They were at it, they were pressing you. The intensity was very high, and I think Suyash, when I think it was in the first episode, and I think it was off YouTube, that you pointed out that Ronaldo, he can maybe how the chemistry might अच्छा वो chemistry in high intensity matches the chemistry might get affected. So do you think it was that, or the whole team didn't perform? What happened? This was my whole question. जो तू बोल रहा है ना, I noticed that as well. Not even you asking this question, and I'm just saying yes to what you're saying. But that happened as well, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि रोनाल्डो के आने से एडजस्ट हुई है टीम, क्योंकि रोनाल्डो उस पोजीशन पे नहीं होता ना, तो वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल पर्सन गेटिंग गोल्स. कोई और पोजीशन, क्योंकि अपना फ्रंट से हमेशा से फ्लूइड था. टारगेट मैन का तभी आया जब कवानी आया, और कवानी कैसा है ना कि उसका इतना बड़ा ईगो नहीं है, या तो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो टीम के लिए एडजस्ट नहीं करेगा. बट रोनाल्डो विल स्टिल, मतलब रोनाल्डो ना, अगर हम लोग खेल रहे हैं, like if you're playing in a system in a fluid front three, Ronaldo will still want to go and be the target man. He'll not be fluid, मतलब वो पीछे drop करके कोई और आगे चला गया, वो नहीं करेगा वो. So not to blame no one is blaming.
And you can't blame Ronaldo. You cannot blame Ronaldo. No one talking about football can blame Ronaldo. No, That's there. We know that. तूने एक और चीज एकदम सही पकड़ी कि टीम्स सिर्फ अभी लो ब्लॉक पे बैठे रहते हैं, वो बात नहीं है. टीम्स ने वो पकड़ लिया है, टीम्स ने यूनाइटेड का वीक मोमेंट भी पकड़ लिया है, और अभी लो ब्लॉक के साथ रहते रहते वो लोग काउंटर भी एकदम इक्वली करते हैं ब्रो. और यूनाइटेड में थोड़ा सा लो फील कर रहा था, फिर जो भी है ब्रो, क्योंकि ऑन पेपर भी नहीं बोल रहा मैं, मतलब ऑन फील्ड में हम लोग जीतने लायक नहीं थे ब्रो. वी डिड नॉट प्ले दैट गुड कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ 20 शॉट्स ऑन टारगेट था, हम लोग फिनिश नहीं कर पाए. वी डिजर्व टू ड्रॉप पॉइंट्स, नॉट टू लूज बट वी डिजर्व टू ड्रॉप पॉइंट्स, क्योंकि वी वर नॉट कन्विंसिंग इनफ. पूरा फुल ओल्ड ट्रैफर्ड था. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, but we were not making, मतलब we were not creating those clear cut chances that we could finish or Ronaldo could finish honestly. And Aston Villa totally deserved their points. Bruno को एक penalty मिला, he skied it. That also depends on Martinez bro, because I saw clips after the game. Martinez bro I was going to give him a shout out. Going to give him a shout out. Just 5 seconds. Martinez bro intimidate करता है लोगों को, intimidate करता है, और मतलब he gets into the players' heads bro. तो ब्रूनो ही स्काइड इट. रोनाल्डो ने तो लिया भी नहीं. कोपा अमेरिका ने बंदे में यही बोला है, अबे तू डर, मतलब पेनल्टी के पहले वो येरेमिना को बोला तू डर क्यों रहा है, अरे क्या हो गया तेरे को, ले इधर ही मारेगा, और वो वही मारो, बंदे ने रुका दिया. मतलब he knows how to win a penalty battle. He get into head. Yeah, someone said. Ayush, salute Martinez. I'll start with saying who played well. Aaron Wan-Bissaka was our best player on the pitch, if you can see. Going forward, I was surprised to see him dribbling out players and all these things. I was like, Adama Traore aa gaya, aisa lag raha tha. Fred was surprisingly better. I will not say he still fits in the team, but he was better than what he has been playing this season, because a lot of times he won the ball back, which was very good from his part. Yeah. But still, I don't think having this team, you don't need to play 2 CDMs. I will stick to my point, because अब इतनी टीम के बाद तुम्हारे पास वरान भी था, पीछे मैगवायर भी था, तुम पीछे हमेशा इसको सीडीएम 2 सीडीएम लेके नहीं खेल सकते अगर सामने वाली टीम हल्की सी भी तेज हुई तो. Which can I stop you there? Ayush, Suyash, is this a valid point that you might have to start tinkering with the formation? You can't play a 4-2-3-1 in every game, which is a fair point. Bro, no, because Fred McTominay का मैंने stats भी देखे हैं, कुछ तो they stand 6th in a good partnership, ऐसा कुछ था. And Fred McTominay, arguably, we've won more games than without them in our team. So Fred McTominay the players ahead of them are creative enough. We have Bruno, bro. अपने पास Bruno है camp पे. We have Pogba left wing, Greenwood right wing, striker Ronaldo है. The players in front of them are creative enough. Fred and McTominay honestly are just there Fred is there to put energy. McTominay चीजें तोड़ने के लिए. He's just मतलब वो breaker. And sometimes McTominay provides a little bit of attacking threat as well, because we've seen it last time. He gets into the box as well. बोल यार. मैं इस पे एक और ऐड करता हूँ, which is fine what you are saying, but अगर मैं बोलूँ अपने सिस्टम में ना एक प्रॉब्लम आता है, फिर being fluid, being rotating and all these things, you don't have a pattern of play. That is the problem. If you are having 2 CDMs और आगे 4 अगर रोटेट कर रहे हैं, तो क्रिएटिवली मैंने ये नोटिस किया है अपने काफी मैचेस में, और स्पेशली अगेंस्ट एस्टन विला, we were having a me first kind of mentality. Greenwood को जहां मिला उसने बजा दिया, इंस्टेड उसको ब्रूनो को पास कर सकता था, रोनाल्डो को पास. And this is not just one match. If you observe the highlights, also watch in all these pattern of play which we have. Me first आके थोड़ा ज्यादा हो जाता है if you are playing 2 CDMs और 4 भी अटैकर उस पे कर रहे हैं तो. Bruno, अगर stats wise Bruno created 10 odd chances, but that is थोड़ा misleading if you see. इतने बहुत clear cut chances नहीं थे Bruno के भी. और Pogba is playing left wing, which is थोड़ा out of position still. We have Sancho on the bench. If you want to give him time and if you want to give him the minutes and all these things, then you may have to start him, and he is direct more. अगर तुम उधर से भी ऑब्जर्व करेगा, Pogba doesn't get the fullback into play a lot because he is drifting, he is rotating. तो वो वाला पूरा खाली हो जाता है एक तरीके. इसमें वहाँ पे शॉ था अपने पास. It was easy for us, but now we don't have Shaw also. Yeah, bro, वही मैं बोलूँगा. Yes, before you speak. No, I was going to add to his question and ask you only that if he's saying if there is no fluid front three, then there is no pattern of play. But last week we were discussing that's what it's all about. You just let them do whatever they want and don't be predictable. So now you can. So bro, in different, मतलब ना this week could have gone differently because Greenwood ने ना, Ayush reminded me, Greenwood had those chances. थोड़ा सा selfish बोलेंगे लोग, but bro, last year we were complaining about Greenwood was not finishing, but he developed his overall play. उसके last season he was finishing a lot, but he did not have overall play. इस season वो combine कर रहा है and he is shining. चल इस एक गेम पे मैं एक गेम के सैंपल साइज पे we cannot start berating players और वो, and it's just a bad week. Yash,
हम लोग यंग बॉयज से हारे थे, थोड़ा सा वो लेके मेंटालिटी लेके आए थे, फिर अभी ये मैच मोमेंटम, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ मोमेंटम थिंग। और फॉर्म पे ना थोड़े लाइक ओले की टीम ना, आई नॉट लाई, यू कैन टेक इट नेगेटिवली बट आई विल टेक इट पॉजिटिवली, बट ओले की टीम ना थोड़ी सी फॉर्म पे, थोड़ा सा इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर, थोड़ा सा ना विदाउट पैटर्न ऑफ प्ले रिलाई करती है। दे जस्ट हैव टू गेट इनटू गुड पोजीशंस एंड देयर आर फ्लूइड, मतलब अटैकिंग टीम, वो फ्लेयर पे भी रिलाई करके कर सकती है, एंड आई बिलीव इन इट ऑनेस्टली बोलूं तो। और शॉ एंड मैगवायर वाज अ बिग मिस टू बी ऑनेस्ट। शॉ एंड मैगवायर भाई बड़े चीज है हम लोग के बैकलाइन में, और शॉ तो भाई लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द सीजन, मैगवायर वो हेडर जीत लेता भाई कॉर्नर पे। one of the best players, yeah. Yeah. I'll just add a small thing. I think सुयश तू जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं तो इनफैक्ट उसमें जो खिला रहे हैं रोटेट करने में बिलीव करता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, वो जो एक हम लोग की वो ये शॉ चला गया तो पूरा लेफ्ट विंग अभी कोई संभालेगा उसका, फिर अपने को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है अगर रोटेट करते रहेंगे स्ट्राइकर वाले आगे भी, तो अगर ये वाला मैच सही चल नहीं लेते। एंड ग्रीनवुड का आई थिंक उसको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास 7 या 8 चांसेस जिसमें से 2-3 तो गोल हो सकते थे उसके भी और किसी टीम वाले के भी। जस्ट पॉइंटिंग इट आउट। अपना इंजरी हुआ, अपना वो बैड लक है, बिकॉज अपना वरना मैं होता तो ग्रीनवुड को 60-70 मिनट में सब कर देता। ग्रीनवुड का you can call it one of those days. One off. Yeah. But I hope it's one off. Yeah. No, that's what happens. It is because you know the talent. तो ऐसा तो नहीं कि आप इससे गेम ही बदल जाएगा। नहीं टैलेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये मी फर्स्ट और एक सेल्फिशनेस आ जाती है ना, वो बस आई होप इट्स वन ऑफ। वो नहीं आनी चाहिए, करेक्ट, बट आई वो डोंट नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगर वो आ रही है तब तुम फिनिश करो, यू किल द गोल, यू किल द ओपोनेंट अगर वो आ रही है, बिकॉज इफ यू आर नॉट फिनिशिंग देन it will look bad on the entire team. Yeah, but that also shows that this guy has developed confidence. वो डर नहीं रहा है शूट लेने। वो तो यार आज गेम आ रहा है, नेक्स्ट 3 गेम में से कोई एक गेम में हैट्रिक मार देगा तो लोग बोलेंगे भगवान, 19 साल का भगवान। वही तो वही आज क्लिक नहीं हुआ। हां यार, इफ अगर सेल्फिश हो रहे हो तो फिनिश इट, अदरवाइज वो एक टीम का क्या टीम को बुरा लगता है फिर। वो सीखेगा, रोनाल्डो है, वो सीखेगा, टेंशन नहीं है। नाउ आई वाज ट्राइंग टू गेट टू दैट पॉइंट। अभी ये पूरे सीजन में ब्रूनो को एक भी पेनल्टी मिलने वाला है। आई थिंक अभी उसको वही पेनल्टी लेगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था रोनाल्डो ही लेगा, पर ब्रूनो को लेने दिया तो ब्रूनो से सीख तो करेंगे अभी। एक चीज मेरे को नहीं समझी रोनाल्डो डज दीस थिंग्स। ये 2 चीज नोटिस की मैंने। एक तो पोर्चुगल में जब उसने 5th पेनल्टी ली थी वो, और आज जब उसको चांस मिला तो ही स्टेप बैक। थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो वियर्ड लगा, आई डोंट नो व्हाई। मेरे को भी लगा, बिकॉज़ आई सेड कि ब्रूनो को नहीं लेना चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। ये मतलब कितना, अगर ऐसा 3-0 हुआ है और 4th गोल का है तो भाई तू ले ले, चल मैंने एक मार लिया है। बट ये वाले पे इफ आई वाज द मैनेजर आई वुड ट्रस्ट हिम। वो मिस करेगा तो मेरे को चलेगा, ब्रूनो मिस करेगा तो मुझे नहीं चलेगा, ऐसा मेरा था। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ फैन, तो मेरे को पता नहीं तुम लोग कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। आई सॉ एन इंटरव्यू यश कि ओले ने बोला कि द पेनल्टी टेकर्स वर डिसाइडेड बिफोर द गेम, सो मे बी दे जस्ट बिफोर द गेम। या एंड ब्रूनो इज नॉट अ, मतलब ब्रूनो भाई बाप पेनल्टीज लेता है। मार्टिनेज भाई आई थिंक रोनाल्डो भी लेता, तो हु नोस, रोनाल्डो वुड हैव स्काइड इट और मे बी मार्टिनेज वुड हैव सेव्ड इट। द ओनली थिंग, इफ यू आर एंडिंग दिस यूनाइटेड का सेगमेंट, the only thing is bro, I'll want to say कि यूनाइटेड फैंस अगर कोई सुन रहे हैं तो प्लीज बैक योर मैनेजर अभी भी, क्योंकि आई हैव सीन ब्रो पोस्ट पे नंबर, मतलब 6 कमेंट्स ओले आउट चल रहा है, and people who were believers they have started commenting कि maybe Ole is not the man for us, maybe he's not tactically good enough. तो ब्रो वो ना हर्ट कर रहा है, क्योंकि ना जो बिलीवर्स थे वो लोग भी थोड़े ऐसे हिल जा रहे हैं अपने डाउट आ गया है ब्रो। और यू नो चल ठीक है, ऐसे लोग जरूरी होते हैं तो थोड़ा डाउट करे टू कीप अस ऑन आवर टोज, बट ब्रो प्लीज बैक योर मैनेजर। मैं लड़ा हूं लोगों से, तुझे पता नहीं, मैं अपनी कन्वर्सेशन दिखाऊंगा मेरे को कितने, मैंने इतने बड़े मैसेज किए। मैंने कहा तुम लोग कहां वैन हाल मोरिनियो पे अटके हुए थे, कम से कम ये फुटबॉल तुम्हें इंटरेस्टिंग तो लग रही है, आगे तो लेके आ रहा है, वहां तुम लोग बैक पासेस करके बैठे हुए थे। भाई रोनाल्डो आ गया क्लब में यार, थोड़ा सा पॉजिटिव। 3 वीक खराब गए हैं, 2 वीक खराब गए हैं, ब्रेंटफोर्ड से हार गए, एस्टन विला से हार गए, बट क्लब अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है। ये 2 वीक से गवर्न नहीं होता हम लोग की पुराने 2-3 साल। और एक मेजर क्वेश्चन पूछा है मेरे से 2016 में, तेरे को याद है अपन ट्रैपजोन स्पोर पे जाके 1-0 नीलोल हार रहे, मतलब नीलोल ड्रॉ कर रहे, तुम लोग को याद है वो दिन? खुश रहो जो भी है। अभी एक क्वेश्चन मेरे से उसने किसी ने बहुत ज्यादा वो पूछा था कि क्या आगे हो गया, you have done the transition, you have got world class players now, do you think is Ole out of its depth? Is Ole out of his depth? Yes, you answer it first. See, as a neutral, out of his depth is putting it in a wrong context. It out of his depth, matlab this is as far as he can go. Yeah, exactly. I know. I'm saying this question
I feel is wrong because it is expecting only a certain answer. Yeah. So वो जो context लगाया क्वेश्चन के पीछे के क्या मतलब खत्म हो गया. हाँ, rhetorical question एक तरीके से. एक मिनट, तो अभी नेक्स्ट अभी ये दो तीन दिन में ट्यूशल का भी आएगा क्या मतलब ये वैसे ही बात हो गई. मतलब हाँ ठीक है, तो लोग का ओले पे क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज ही डजंट हैव ट्रॉफीज वन, एंड ये वीक काफी गंदा गया है. एंड नाउ सेकंड इज I feel थोड़ा that the pressure is getting to him. I'll tell you why. ये मैंने ये I'm going back 2 weeks back में जा रहा हूँ थोड़ा. The game in which Ronaldo वाला वो game में penalties नहीं मिला and हाँ, तो in the post match interviews and everything and then next week वो Klopp वाला he started, you know, मैंने जो देखा है ना उसको 2.5-3 साल में he's a very positive person. कुछ भी हो जाए यार it didn't go our way, ठीक है बहुत अच्छा खेले. अभी ना वो थोड़ा वो सॉल्टी होते जा रहा है कि भाई पेनल्टी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया रोनाल्डो को. फिर सेकंड वाला मे बी क्लॉप ने वैसा बोला था तो तब से इफेक्ट हो गया है. मतलब वो थोड़ा ना क्रम्बल, ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर इज गेटिंग टू हिम बिकॉज़ ही हैज चेंज्ड द वे ही गिव्स इंटरव्यूज एंड व्हिच इज नीडेड आल्सो. थोड़ा जरूरत है. सो या अरे प्लस तू देखना एस्टन विला वाला गोल यार ऑफसाइड है. उससे एग्जैक्टली एक लास्ट वीक ही में एक कौन से मैच में था यार, सिमिलर ऑफसाइड दिया गया था. ब्रो मेरा और वॉटकिंस ऐसे खड़ा था बे उसके पीछे, डया के पीछे. ब्रो मेरा आंसर ये है कि देख तुम लोग ओले को डाउट कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन लेके जो बनाई ओले ने. मतलब वो अपने खुद के सक्सेस का शिकार नहीं बन सकता यार, टू बी ऑनेस्ट. ही कैन नॉट बी द क्रिमिनल ऑफ हिज ओन सक्सेस. क्योंकि ओले ने हम लोग को इस पॉइंट तक लाया है कि हम लोग अब उसको टाइटल कंटेंडर्स जैसा ये कर रहे हैं. And now if he is losing 2 or 3 fixtures, you cannot just start doubting your manager. I mean, he is the one who brought you here. He is the one who changed the club, bro. और अब तुम लोग क्लब पे डाउट कर रहे हो कि भाई ये क्या कर रहा है तू. मतलब ये क्या गंदा मेरे से ब्रो, ये क्या गंदी मेंटालिटी. मतलब ऐसे मतलब रिलेशनशिप में रहोगे ना, मतलब गर्लफ्रेंड तुझे ऊपर लेके उससे तो गर्लफ्रेंड पे ये तू क्या कर रही है. मतलब अभी नहीं चाहिए तुम्हें, यूज कर लिया बात खत्म, निकल जाओ. ये यूनाइटेड नहीं है ब्रो. प्लीज इफ somebody also if you question, it's okay to question him, but if you are Ole out right now, no, you have to understand that you are erasing the 3 years of progress which he did. ठीक है, ट्रॉफी नहीं आया अभी और अभी एक चांस था नहीं मिला. बट अगर तुम चलो तुम्हारी मान भी लिया, तुमने बदल भी दिया ना, a new manager will come, he doesn't guarantee trophies or success. मतलब he might guarantee a new style of play, freshness, a new tactic जो try करेगा, but पूरा उसका जो मेहनत है वो zero हो जाएगा and you start afresh, which you can't afford because भाई यश वैसा हो गया ना ब्रो. या इट इज द वर्स्ट ब्रो. इतना प्रोग्रेस क्या पूरा पानी फेर. अगर सोच लोग ना किसी ने कॉन्टे बोल दिया, मैं कमेंट में वो पढ़ के मैं 1 घंटा सोचा कि फक कौन सा आ गया, तो मैं सच में ना अपने लाइफ के बारे में सोचने लगा कि फक क्या हो जाएगा भाई. क्योंकि इतना बिल्ड किया ओले ने, इतने सारे इतनी पॉजिटिविटी है क्लब से डायरेक्शन में, यूथ अकेडमी से, ये अपर मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है, वुडवर्ड भी चेंज हो गया है, घर रोनाल्डो आ गया है होम पे. क्या क्या नहीं बदला है बंदे ने यार. मतलब इफ यू जस्ट चेंज दिस, इफ यू सैक ओले, तू इमेजिन कर रहा है हम लोग कितने वापस पिट पे जा सकते हैं. वो तो just sacking managers का पिट तो just like going 3 years back. Yeah, I mean no. But what I've realized is when Ole is under pressure, teams performs extraordinarily well. So that is what I'm hoping. Plus we have good tough fixtures in these 2 months. Yeah. So if these 2 months go well, then we are good to go. Probably for our contender list as well. Inshallah. So let's end it with this. This is a good cue to end the discussion. Let's hope it goes well. And 2 months may things turn out differently. Not 2 months. Next week we will have 2-3 games to discuss क्योंकि चैंपियंस लीग भी आ जाएगा and stuff. तो यार देखते हैं. Hope सब बदल जाएगा. So the other few matches which we can discuss about very quickly, the other ones which were Everton, they had a like 2-0 win. Then the Leeds West Ham United game was where Antonio came back and he scored again and stuff. Yeah, so yeah, let's go on. उसका क्या हुआ? लीड्स का ब्रो आई डोंट नो यस क्या प्रॉब्लम है. फर्स्ट हाफ में दे वर लाइक ऑन, मतलब मस्त खेल रहे थे, लाइक दे डिजर्व द 1-0 विन. आई डोंट नो व्हाई दे ड्रॉप. मुझे लग रहा है कि ये वही चीज है जो क्लॉप, आई टोल्ड यू लास्ट ईयर क्लॉप के बारे में, कि वो प्लेयर्स ना इफ दे हैव वन फुल सीजन ऑफ कॉन्स्टेंटली फकिंग प्रेसिंग, सेकंड सीजन दे टेंड टू बर्न आउट अ लिटिल. मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं होता, प्लेयर्स थोड़े इंजर होने लगते हैं. इसमें फिर भी लीड में वो बर्न आउट दिखता नहीं है. बट आई डोंट नो लाइक इफ दैट डाफ्ट और दैट डम्ब ऑफ व्हाट, बिकॉज़ वेस्ट हैम did not need to commit that much. और वेस्ट हैम ने फिर यार फायदा उठाया. एंटोनियो लास्ट मिनट गोल भी भाई बहुत सही गोल था. एंटोनियो क्रेजी बीस्ट है यार, वो इंस्पिरेशन है यार आदमी. एंटोनियो मुझे लगता है वो सांड होते हैं ना, जब खड़ा हो जाता है बस मार देता है वो ऐसे. और फॉर्म में चल रहा तो इन फॉर्म सांड है वो एक तरीके से समझ लो. तो लुकाकू कौन है? लुकाकू बैल है, वो बुद्धि नहीं उसके पास. Okay.
ठीक है, But not the and I think ideal Suyash mentioned description, सही but कह yeah. रहा है वो लीड्स का यार मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ तो कम हुआ है क्योंकि वो जिस तरह वो लास्ट टाइम अटैक करे घुस रहे थे हर जगह से चारों खाने चित करने के लिए इस बार वो उतना नहीं दिख रहे और बैमफोर्ड भी मेरे को आउट ऑफ सॉर्ट्स लग थोड़ी रहा है सी थोड़ा बैंफोर्ड को खेला ही प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं आ ब्रो। गई ना, थोड़ी सी बैंफोर्ड वाज प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है 2 और सीजन के लोगों को बाद पता की। चल गया है कि लीड्स कैसा या खेलता है तो वो और सीन क्या है पता है, और रियल वरी पता है या मुझे क्या है, आई नो यू सपोर्ट लीड्स, वी ऑल थ्री ऑफ अस या सपोर्ट लीड्स, वी जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट लीड्स ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सीन पता या है क्या है कि इस सीजन ना, इफ लीड्स आर प्लेइंग द वे दैट दे ऑलवेज प्ले और रिजल्ट्स उनके साइड नहीं आ रहे, एंड इफ इट्स रेलिगेशन प्रेशर, देन विल बियल्सा चेंज थोड़ा भी कि क्या भाई, क्योंकि इफ ही कीप्स गोइंग एंड रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग तो नॉट इवन 1%, ही विल नॉट वो चेंज इवन वरिंग है ब्रो, 1%। वो वरिंग है बिकॉज लीड चाहिए इस जगह पे, ये लीग को थोड़ा भाई। ढीठ है वो ढीठ है। उसको हाँ बोलेंगे बदलो तो वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ। मैं जा ही इज रहा लाइक हूँ। दैट, ही इज मुझे लाइक लीड्स और ब्रेंटफोर्ड चाहिए ऐसे ही खेलते हुए अगले सीजन भी हाँ। पर यू नो दैट्स नॉट रियली, ब्रेंटफोर्ड का भी अगले सीजन में कोई प्रमोटेड टीम आएगी तो वो प्रॉमिस दिखाएगी ब्रो, दैट इज हाँ, प्रीमियर लीग ब्रो, वही तो सीन है। we'll have to see how Brentford like does, if they stay up, if they end Yeah. up staying up, which looks likely, how they'll play in the next season, because next season people will expect Brentford to play in a certain way and players also. Yeah. So the other matches which we can discuss about is which one? Wolves one. Watford Newcastle 1-1. I did not watch the game, but yeah, Ismaila Sarr is in a good run. If you guys want to, if anybody is FPL. watching for FPL points, तो मुझे मत पूछो, यश को पूछो क्योंकि यश है भाई अपना एक्सपर्ट, अभी नया कुछ नहीं यश भाई, अपना किंग है एफपीएल किंग यश किंग है अपना अभी। अपन हम लोग सहवाग है, सहवाग पहला 4-5 बॉल पे बाउंड्री मार देते, बट फिर 3-4 ओवर में आउट भी हो जाते। नहीं ऐसा कुछ नहीं अरे है। तू आउट नहीं हो रहा ना तो सहवाग वो 300 वाला मैं सहवाग था 3 हफ्ते बहुत अच्छा किया फिर आउट हो गया ठीक है। And Wolves also 1-0 win against Jimenez Southampton. scored after 300 odd days which is good Yeah. Fucking took away Livramento का screen sheet, but yeah, good. हाँ, थोड़ा मेरे को भी दर्द हुआ, मैंने भी लिवरामेंटो रखा था तो वो अच्छा था। मैंने भी रखा था बट फरहान टोरेस नहीं खेला तो मेरा मार्शल ऊपर आ जाएगा Yes, Marcel. I had Marcel in the first team only. Yeah. oh Great. So I think all King. in all, it was a very bizarre week, because it started off with United losing, and then for you guys it would have been like hell, because So बाकी सब matches बाकी first match ही हम हार गए, but then Chelsea भी हार गई, Liverpool also drew, so it balanced out. Balances out. Yeah, and we have the Champions League coming up, and वापस next week Premier League fixtures. So I think it will be fun, and this whole October-November period is going to be crazy. So we are missing one very fun fact. If Brighton win tomorrow, they'll be top of the league. Oh my God! Crystal Palace Brighton, they yet to play. Yeah, 12:30 kickoff. Correct. Yeah. And Brighton, yes. I hope they keep a clean sheet. And Brighton तो हमेशा से भाई, Duffy is a revelation. He's a really Sanchez good and Duffy. Revelation. Yeah, Brighton. Let's see what happens. But yeah, I think any last words you want to end the video with? Yeah. Just that if you guys, I'll just say, पहले तो यूनाइटेड फैंस को मैं अपील करूंगा, अगर यूनाइटेड फैंस देख रहे थे, प्लीज बिलीव इन योर मैनेजर, प्लीज बैक योर मैनेजर, अच्छे टाइम्स आएंगे, डोंट जस्ट ट्राई टू फाइंड द फॉर्मूला कि ओके ये मैनेजर वो मैनेजर, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंट रहो, पहले भी ऐसे रन आए हैं जब यूनाइटेड थोड़ा ऐसे ड्रॉप हुई है, बट ऑलवेज आफ्टर दोज रन ऐसे रन आए कि ओले की टीम ने पूरे टाइम परफॉर्म किया है, एंड I mean, Ole is a nice guy and his team wants to play for him. They always believe in him. Ole believes in his players. तो अच्छा टाइम आएगा. Second, अगर तुम लोग के पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. परफेक्ट. और हम लोग हर वीकेंड पे हर संडे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे. Also, Suyash comes from Canada. He comes from Manchester, and I'm from India. So yeah, we have 3 different times of coordinating. So yeah, Aayush. Even me being a United fan, I think I'll agree with Suyash and add to that please SAF के time पे भी ऐसा नहीं था हम हर मैच जीतते थे, but trust the progress because we have come so far, and giving away all that and finding a new manager, different style will be another change which I don't think I can personally handle. Please respect your manager and accept that it is a progress and it is a process, and we'll move on. I think it will be better. Respect Nuno as well. Yeah. Respect Nuno as well. He will also do well. And please like, subscribe, and watch our videos. We have fun content. We do bakwas a lot.